Okay, so these are the four directions. North is here, south is here, east is here and west is here. So these are the four direction. और क्वेश्चन में ये बताना है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से स्टार्ट करके किसी और डायरेक्शन पे जा रहे हो तो आपने उस बीच में कितने राइट एंगल्स को कवर किया. तो दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, इन द फर्स्ट पार्ट you are facing the south direction. जो फर्स्ट पार्ट में हमारा फेस है इट इज इन south direction. We are facing south direction. Okay, so this is our head, this is our nose. We are facing the south direction, and after that we are turning clockwise to face the east direction. Initially you are facing the south direction, then you have taken a turn in clockwise direction, and now you are facing west direction. ठीक है, now you are facing west direction. पहले आपका फेस था साउथ डायरेक्शन में. आफ्टर टेकिंग अ क्लॉकवाइज टर्न यू आर फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन. तो आपने इसमें कितने राइट एंगल्स को कवर किया. तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि वन राइट एंगल वाज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, और वो 1/4 रेवोल्यूशन किसके बराबर था, 3 पार्ट्स के. तो उस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम ये पता करेंगे कि 1/4 रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होता है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में वी हैड आवर क्लॉक और उसके टोटल पार्ट्स थे 12. इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग 4 डायरेक्शन एंड द टोटल पार्ट्स आर 4. तो फॉर दिस क्वेश्चन टोटल पार्ट्स is equal to 4. There are 4 total parts. ठीक है, the total part of in this question is 4 and revolution कितने का बन रहा है. Part covered in making 1/4 revolution. The part which is covered in making 1/4 revolution is 4 into 1/4. ठीक है, 4 into 1/4. तो 4 1 is 4 and that upon 4, when 4 1 is 4 and you have to divide it by 4. तो when you will divide 4 by 4 the result is 1, क्योंकि 4 1 times अपने साथ जाता है, 4 अपने आप को 1 टाइम डिवाइड करता है. 4 1 is 4. तो आंसर इज 1 part. Okay, so a right angle in this question will be formed when we will cover one part, only then a right angle will be formed. Okay, ठीक है, तो one right angle is equal to 1/4 of revolution, and we have right now discovered that 1/4 revolution is equal to 1 part. मतलब अगर आप 1 part complete कर दोगे then you will complete one right angle. If you are completing 1 part then you are completing one right angle. Okay, so in this question हमने साउथ से स्टार्ट किया था, क्लॉकवाइज टर्न किया और हम वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम साउथ एंड आफ्टर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी हैव रीच्ड वेस्ट. तो साउथ से वेस्ट जाने में हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव कवर्ड? वी हैव कवर्ड 1 पार्ट. ठीक है, साउथ से वेस्ट जाने में वी हैव कवर्ड 1 पार्ट. सो टोटल कितने राइट एंगल्स फॉर्म हुए? वी हैव कंप्लीटेड ओनली 1 राइट एंगल. व्हाई? बिकॉज one right angle is completed when we will complete 1 part. ठीक है, तो साउथ से वेस्ट जाने में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन we have completed 1 part. So here you will write one right angle is formed. One right angle is formed when we move from south to west in clockwise direction. Direction you must specify कि आप किस direction में move कर रहे हो. Either you are moving in clockwise direction or you are moving in anti-clockwise direction. So one right angle will be formed when you will move from south to west in clockwise direction. Okay.
Let's take the second part of this was part A. This was part A. We were doing question number 6, part A. Now we will take the second part of this question, part B. Okay, so now we are taking question number 6, part B. In this question also, you have to start from north direction and turn anti-clockwise direction to reach east. Okay, so let us saw the direction first. This is east, this is south, this is west, and this is north. Okay, so you are at north direction. आपने north direction को face कर रखा है. उसके बाद the question is saying that you will turn anti-clockwise. Clockwise is this, and anti-clockwise is opposite to the direction of the clock. Okay, so you will move anti-clockwise. Now your direction will change. Like this, you will move anti-clockwise. Okay, your direction will change in this direction, and after turning in anti-clockwise direction, you are facing east. Okay, so you have started from facing the north direction. You have started from facing the north direction, turned in anti-clockwise direction, and now you have reached the east direction. Okay. Okay, now so you have started from north direction, taken anti-clockwise turn, and your final position is east direction. And you have to tell कि आपने north से east आने में in anti-clockwise direction how many right angles were formed. So we already know that one right angle will be formed when one part is completed. ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट में आने पे हम अगर ये देख लें कि हमने कितने पार्ट्स को कवर किया है, तो देन दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स कवर्ड विल बी इक्वल टू वन राइट एंगल. तो हमने ये पार्ट कवर किया, दिस फर्स्ट पार्ट ये कवर किया. ठीक है, सेकंड पार्ट इसको कवर किया. पहले आप नॉर्थ से वेस्ट में आए, आपने एक पार्ट कवर किया. देन आपने वेस्ट से साउथ में आके सेकंड पार्ट कवर किया. फिर आप साउथ से ईस्ट में गए, यू हैव कवर्ड द थर्ड पार्ट. तो इन टोटल यू हैव कवर्ड 3 पार्ट्स. Okay, in total you have covered 3 parts from starting from north direction, taking an anti-clockwise turn and reaching the east direction. इस पूरे process में you have covered 3 parts. So as we already know that one right angle will be formed when we will cover one part. ठीक है, जब आप एक part cover करोगे then you will get one right angle. तो यहाँ पे हमने we have covered 3 parts. तो कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे? Clearly we can see that if 3 parts are covered, तो 3 right angles will be formed. Okay, so 3 parts are covered here, so 3 right angles will be formed. So you will write 3 right angles will be formed. 3 right angles will be formed when we will start from north and reach east in anti-clockwise direction. Okay, so 3 right angles will be formed when we will start from north and reach east. ठीक है, आप north से start करके east में पहुंचोगे in, ठीक है, आप north से start करके east में
में पहुंचोगे टेकिंग एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यू विल कवर 3 राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स कैसे कवर किया हमने ये देखा कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 पार्ट, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वी हैव कवर्ड इन टोटल 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज दिस नॉर्थ से वेस्ट गए, सेकंड पार्ट इज वेस्ट से साउथ में गए, थर्ड पार्ट इज जब हम साउथ से अपने फाइनल डेस्टिनेशन ईस्ट पे पहुंचे। तो यहाँ पे इन टोटल वी हैव कवर्ड 3 पार्ट्स, so we can say that we have formed 3 right angles. So we can say that 3 right angles have been formed when we have started from north, reached to east direction in taking an anti-clockwise turn. Okay, so this was your part B. Children, part C of this question is omitted from your syllabus, so you don't have to study, you don't have to do that part, but it is advisable to you that you practice that part at your home. ठीक है, do it in your practice copy or in your rough copy just for your practice. ठीक है, तो you part C of question number 6 is omitted from your syllabus, but you have to still do it as a practice question. Okay, now we are taking the last part. Now we are going to take the last part of the question. The last part is part D. So let us read the question first. In part D of question 6, the direction is from south to turn. You will start facing from south and turn to north. If you will clearly see the question, the direction whether we are moving anti-clockwise or clockwise is not specified to us. इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हमें ये नहीं बताया गया कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वी विल टेक बोथ दी डायरेक्शन, हम लोग दोनों डायरेक्शंस के साथ अपने आंसर्स को लिखेंगे, इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आल्सो एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आल्सो, बोथ डायरेक्शन वी विल टेक इन दिस क्वेश्चन। ओके, बिकॉज द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड कि आपने कौन सा टर्न लिया है। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। This is south, this is north, east and west. These are the 4 directions and you are starting from south. हम यहाँ से start कर रहे हैं। ठीक है, तो first we will take the clockwise turn. First turn हम लेंगे clockwise, क्योंकि in the question we are not mentioned कि हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, तो फर्स्ट वी विल टेक दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, वी आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टेकिंग दी clockwise direction, south to north taking the clockwise direction. Okay, so we will start from here, go like this and reach here. यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, we will start from south, take the clockwise turn and reach the north. ठीक है, यहाँ से हमने start किया, तो south was our final initial point and north was our final point. हमने एक clockwise turn लिया। ठीक है, while moving from south to north we have covered 2 parts. So these are the 2 parts which we have covered while going from south to north in clockwise direction. As in the question, the direction of our turn is not specified, so we will take both the direction clockwise also and anti-clockwise also. In first case, I am taking the clockwise direction. You are going from south to north in clockwise direction, and in that duration you have covered 2 parts. That means 2 right angles will be formed. So how many right angles will be formed? 2 right angles will be formed. Okay, in the first part, when we are moving from south to north in clockwise direction, 2 right angles will be formed because we are covering this part and this part. So 2 right angles will be formed. Okay. Now consider the anti-clockwise direction.
In second part, we are taking the anti-clockwise direction. Anti-clockwise is opposite to the direction of the clock. ठीक है, anti-clockwise direction is opposite to the direction of the clock. Since the direction is not mentioned in the question, we will take both the directions. First, we have solved for the clockwise direction, and secondly, we are solving for the anti-clockwise direction. ठीक है, in this anti-clockwise direction, you will have to move against the direction of the clock. तो direction clock के against कैसे होगी? हम ऐसे move करेंगे. We will move like this. ठीक है, अब आप साउथ से नॉर्थ इस तरह से जाओगे ऑपोजिट साइड में. तो इस पार्ट को कवर करने के लिए हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव कवर्ड? यू हैव कवर्ड 2 parts. This part and this part. ठीक है, to reach from south to north we have covered 2 parts. So how many right angles will be formed? Only 2 right angles will be formed. 2 right angles will be formed. Okay. So 2 right angles will be formed when we will move from south to north in anti-clockwise direction. ठीक है, in both the direction, be it clockwise or be it anti-clockwise, we have seen that 2 right angles were formed. ठीक है, अब साउथ से नॉर्थ जब anti-clockwise गए तब भी 2 right angles बने. अब साउथ से नॉर्थ जब clockwise गए तो भी 2 right angles बने. So this was your question number 6. In our next class, we will take up the last question of this exercise, that is question number 7. Okay class, thank you.